familiar with the name power spectral density? This power spectral density is usually understood as the Fourier transform of autocorrelation function of some random process or random signal. So let us try to have a look at the definition that we have been seeing so far as energy spectral density, which is also a Fourier transform of the corresponding autocorrelation function of energy signal. Suppose we denote autocorrelation function of energy signal as Rxx tau, then the Fourier transform of this Rxx tau or Rxx m particularly, this tau is a real time, a continuous time parameter, m is a discrete time parameter. So Rxx m rather will be having corresponding Fourier transform which will be called as energy spectral density. So the development of that, ये मैंने आपको पहले से भेज दिया है. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अब क्या होता है, उसी तरह से जो ऑटो कोरिलेशन है पावर सिग्नल्स का, उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म है. But another way of looking at power spectral density is also through some Parseval relation. So let us first try to define Parseval relation, and then we will try to see the power spectral density through autocorrelation. तो पहले हम एक जनरल सीक्वेंस के लिए देख लेते हैं, बाद में इसको या डिफाइनेबल डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के लिए देख लेते हैं, बाद में इसको हम फिर रैंडम सिग्नल्स के लिए देखेंगे. Okay. So one of the way to see at power spectral density is to see the power of a truncated sequence, जो कि truncated sequence की या finite time sequence की एनर्जी आती है. So that energy can be calculated only if the signal is a finite time signal, or otherwise the signal is having a converging sum in the mean square sense or in the absolute sense. तो हम अभी यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस है xn और ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, जैसा यहाँ पे बताया है. दिस इज शोन हियर, इट इज इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, राइट. अगर आप इस सिग्नल को ट्रंकेट कर देते हैं तो -n से लेके प्लस कैपिटल N तक ये xnn एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस बनती है. ये ट्रंकेटेड सीक्वेंस फाइनाइट ड्यूरेशन की है, इसलिए ये एनर्जी सिग्नल की कैटेगरी में आ जाती है. एवरी फाइनाइट टाइम सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल. तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है. इसका मतलब अगर इसका मॉड xnn स्क्वायर किया जाए और इसको सम किया जाए फॉर ऑल n, तो नेचुरली ये ऑल n तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये -n से लेके प्लस n तक ही इसका एग्जिस्टेंस है. तो ये -n से लेके प्लस n तक अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन उस समय हम इसको फिर या तो xnn कहें या फिर xn कहें, बात एक ही रहेगी. सो अवर लेफ्ट हैंड साइड, which we start with, of course, saying from -infinity to +infinity, because in the energy relation the basic summation goes from -infinity to +infinity. Then it can be modified in this form. Okay, so let us try to substitute the value of xnn square, and that becomes xn square xn mod square under this definition. So if you just substitute this definition, it is converted into this form. अब इसके राइट हैंड साइड को देखें. The Parseval's theorem says कि जो आप टाइम डोमेन में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं, ये तो हमको सबको पता है कि हम मॉड xn स्क्वायर करके उसका समेशन करते हैं फॉर ऑल n. ये टाइम डोमेन मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी. फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड क्या है? करस्पॉन्डिंगली उसकी जो ESD है, इसका मतलब ये जो xn e पावर j ओमेगा स्क्वायर मॉड स्क्वायर है, ये इस xn n का जो कि फाइनाइट टाइम सिग्नल है, इसका DTFT है. इसका मतलब अगर हम xn e पावर j ओमेगा की डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या है? xn n का e पावर माइनस j ओमेगा n से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में समेशन फॉर ऑल -infinity to +infinity वैल्यू ऑफ n. But because again we know that xnn is existing from minus capital N to plus n, तो ये भी modify हो जाएगा. But we can not say that initially in the definition of DTFT, क्योंकि DTFT की definition में हमेशा -infinity से लेके +infinity तक की summation हम पहले show करते हैं. So this is xn e power j omega, which is utilized here, which is the Fourier transform or DTFT of xnn. Now this mod xn e power j omega square d omega, when we do, this is the frequency domain approach of calculating energy, which is a finite time signal or finite time sequence.
So energy of a finite time sequence can be calculated in time domain using this formula, and using the Parseval's theorem can also be calculated using this formula. Both are giving equivalent results. इक्विवेलेंट रिजल्ट्स ये अपन ने क्लास में भी देखा था, अभी भी इसको मैं आपको बता दूंगा, तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हेन वी start with this notion, then this energy can be divided by the number of samples that we are considering here. Suppose I replace this xnn by xn, then xn and xnn, they are equal between minus n to plus n. Therefore, this xnn I can write as xn itself. So this becomes now mod xn square, and therefore mod xn square, this is nothing but now the energy of xn itself. ये x की एनर्जी नहीं है, ये xn मतलब truncated sequence की एनर्जी ही है, which is equal to the right hand side is as it is. Now when I divide this left hand side and right hand side both sides by number of samples, that is 2n plus 1, it becomes 1 by 2n plus 1, and this also becomes 1 by 2n plus 1, and there is an integral also. When I divide it and let the capital N reaching the limit infinity, when I extend this limit, तो फिर ये convert हो जाएगी energy divided by the number of samples or the time duration. It means this is power, and this power is extended for the whole signal now. That is, we don't have any bar on capital N, and therefore, though we start with minus n to plus n, but then we start stretching this limit up to infinity, and therefore the complete signal is covered, and we say that the xn, which was of infinite duration, is now covered, which was of infinite duration. This xn was truncated version of the infinite duration signal xn. तो हम xn का जो कि infinite duration signal था, उसकी n को लिमिट को बढ़ाने के बाद में दरअसल xn की पावर को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. So now this left hand side has become the power of that signal, which we called as infinite duration signal. Right hand side is nothing but the frequency domain approach of doing the same thing. So let us try to see what happens on the right hand side. We take this limit and 1 by 2n plus 1 inside. It means we are first trying to operate the limiting operation, and then we are trying to integrate it. इसका मतलब पहले अपन लिमिट ले रहे हैं, बाद में इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगा एक PSD के इंटीग्रेशन का, where this bracketed term will be nothing but PSD, the power spectral density. And therefore, how do we define the power spectral density? We define power spectral density as Gx e power j omega. So when I say that this limit n tending to infinity mod of xn e power j omega square divided by 2n plus 1, right? The same thing that we have on this right side as well as this right side. This is nothing but the inner integrand of this integral, which is Gx e power j omega, will be called now as PSD. So this is the way of looking at PSD from a different point of view, not from the autocorrelation point of view. Okay. Now, the autocorrelation of a power signal will also be having the Fourier transform as the power spectral density. So now let us go for relationship from autocorrelation point of view. Okay. Now, how this PSD that we have determined here, we see that the PSD when integrated versus frequency gives power, because PSD, which is power spectral density, is nothing but power versus frequency, and therefore we can call it a graph of power per unit frequency, and therefore when you multiply it by frequency, it gives power. Okay, so we accept the definition of PSD so far as this definition, right? Mod of xn e power j omega square divided by 2n plus 1, limit n tending to infinity. This is called PSD. Now the next thing that I am trying to point out is, when we try to go from a deterministic signal to a random process. So from the deterministic to a random process situation is like this, that for random process, we first calculate the autocorrelation of a random process and then take the
Fourier transform or DTFT of that, and that becomes PSD. So how that is also the same PSD that we have derived so far, है ना? ये हम देखेंगे अब वो एक ही क्यों है. Okay. For that we need to go for definition of time averaged autocorrelation. What is meant by time averaged? The averaging will be done on the time scale, and the time averaged autocorrelation will be just like the autocorrelation of an energy signal. If you just compare the autocorrelation of a power signal and energy signal, there is no difference basically. If you just try to see, there is only one difference, that this is what we call as the original sequence and the delayed sequence multiplication summed up for all n. That is what gives us the autocorrelation calculated at the value of m, and m lies here. So this RxX m is basically this what you call is autocorrelation of energy signal, and defined like this. Okay. So when I try to compare this with the autocorrelation of a power signal, there is not much difference. This particular summation is now having a limit from minus n to capital N, so that this also is a kind of going towards the energy, which is possible, right, for an energy signal. So we have truncated it, and the truncated version is now working. Therefore, when we divide it by the time duration, that becomes a power. So this is like an energy calculation divided by time duration, it becomes a power. And therefore, time averaging of the autocorrelation of an energy signal becomes the time average autocorrelation of a power signal. Or power signal or a random signal, both are same, because random signals are also classified as power signals. So when I try to see this like this power signal is having the autocorrelation, where power signal is nothing but this xn, and we have truncated that first between minus capital N to plus n, and then we have divided it by n plus 1, because we wanted to take the average of this, which you call as time averaged, and this autocorrelation is now time averaged. Therefore, it becomes the autocorrelation of power signal. So because this was indicating some energy kind of relationship, divided by the time, it becomes a power. Therefore, this is the power autocorrelation. Okay. So power signal का autocorrelation और energy signal का autocorrelation, ये दो अलग-अलग चीजें हैं. Okay. दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक का फोरियर ट्रांसफॉर्म ESD है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो दूसरे का फोरियर ट्रांसफॉर्म PSD है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है. ओके. नाउ दिस RxXm, when we further elaborate it, now I can take this xn replaced by the truncated sequence xn n, and therefore this becomes xn n minus n, right? So when I try to replace it, it becomes xn n, so that I don't have to put the limit from minus n to minus n to plus capital N. This is now modified from minus infinity to plus infinity, so that this summation I can call as the convolution of two sequences. One is xn n and another is xn minus n. One of the fact that we forgot earlier to conclude, that autocorrelation of energy signal also can be calculated like that. Let us try to see how it is calculated like a convolution. This summation, which is nothing but of the product of xn and xn minus m, which was called autocorrelation of energy signal, was being calculated for a particular value of m, and this m was appearing here, right? So this can be also seen as the convolution of, like xn convolved by hn, which was giving xk hn minus k. So with a little modification, if I try to see this here, if I try to see this here with a little modification, what I see is, with some replacement of this k by some number, n minus k by some other number, I can manage it to see that this convolution formula is applicable for this sign also. What we have started putting here between xn and a folded xm. xm is sequence and x minus m is a folded sequence. So we convert first n axis into m axis,
right, and obtain xm, and then we fold it. So folded xm and original xm, if they are convolved, we obtain autocorrelation. That's how we go for the corresponding DTFT also, because DTFT अगर इसका ले तो ये x e power j omega है, और इसका DTFT ले तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि वो x conjugate e power j omega आ जाता है, और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो ये mod x e power j omega square हो जाता है. We call this particular item as energy spectral density. So Fourier transform of autocorrelation, which is autocorrelation of energy signal, gives the energy spectral density. So they are Fourier transform pair actually. Autocorrelation and PSD or ESD, they are Fourier transform pairs. Now let us go for Parseval relation using the DFT notation. Can we apply the same concept over DFT notation to complete it? Let us also try to complete this DFT version so that ये कई बार periodogram calculate करने में काम आता है. So we also go for Parseval relation when rather than DTFT we are using DFT. Okay. So for that, suppose we have two sequences xn and yn, both are say complex sequences, and therefore some conjugation is possible if the time comes. So if they are real, good enough, but if they are complex, we also welcome that. So xn or yn, ये दो sequences का जो corresponding DFT है, which is n point DFT, is xk and yk. So of course we have assumed that xn and yn both are also lying in the range of 0 to n minus 1, right? And then only we have n point DFT of that possible. So suppose xn and yn both are going from 0 to n minus 1, and therefore when we take the product xn and y conjugate n and then sum it up over 0 to n minus 1 of small n, then this can be proved to be equal to the right hand side where we have used the DFTs correspondingly xk and y conjugate k. So how this is possible, this is developed here. So I don't go into the detail of that, but I want to conclude one thing. Suppose I have yk is equal to xk itself, then उस केस में मैं यहाँ पर xk और x conjugate k को multiply करूँगा. In that case, this will be mod of xk square, which is on the right hand side. So the left hand side expression becomes xn into x conjugate n, and therefore it becomes mod of xn square, and right hand side becomes xk and x conjugate k, therefore it becomes mod of xk square, and therefore this is the time domain approach of calculating the energy of a finite time signal xn extending from 0 to n minus 1. The same energy I can also calculate using this relationship. Now I have utilized the DFT here, right, rather than DTFT. So the energy calculation using DFT, how can we do it? This is shown here. The same thing was possible here when we tried to see ESD relationship. That was also possible there. Let us try to see that also. Try to see this. When I say energy is calculated for a signal as mod of xn square, because the signal was considered to be infinite duration signal, therefore this minus infinity to plus infinity. और अगर इसका टाइम डोमेन में ये एनर्जी कैलकुलेशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमको पता है कि ये कैसे कैलकुलेट होती है. Using ESD, the energy spectral density, we can also calculate this. So this is also established through Parseval relation. So Parseval's theorem जो एनर्जी के सिग्नल्स के ऊपर लगती है उससे ये चीज डिराइव की गई है. So I hope this will be clear if you have just replaced now DTFT by DFT. So what we see now, that because the time duration is limited, so n equal to 0 to n minus 1 only, this xn extends on the left hand side time domain calculation of energy, and right hand side rather than frequency, right, we have now k equal to 0 to n minus 1, right. Earlier this was DTFT, mod of DTFT, that is mod of x e power j omega square. We just compare this relation with this relation, and that's how we make it. We compare this relation. This is mod x e power j omega square d omega for the whole range of
omega, which lies between minus pi to pi. So the fundamental range of omega is covered here. It means for all frequencies. So the DTFT, when it is replaced by DFT, वो relationship यहाँ पर ये हो जाएगी. With that idea, we proceed for power spectrum estimation. And for power spectrum estimation, we first note why to go for estimation. Why not to have the power spectral density calculated as it is? प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम सिग्नल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली बात तो वो रैंडम सिग्नल्स हैं, राइट. दूसरा ये भी है कि जो सिग्नल्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, होना तो उनको चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में, प्रैक्टिकल केसेस में, जैसे सीस्मिक डेटा है, अर्थक्वेक का जो सिग्नल हम नोट करते हैं वो सीस्मिक सिग्नल कहलाता है. तो सीस्मिक डेटा थोड़े टाइम के लिए आया और बाद में हमारे पास में उसका कोई डेटा ही नहीं है. इट मीन्स वी हैव ओनली अ फाइनाइट सेगमेंट अवेलेबल. एक. दूसरा, जब हम डेटा सीक्वेंस को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें नॉइज जो हो रहा है वो रैंडम हो रहा है, इसलिए ओवरऑल सीक्वेंस जो हम रिसीव करते हैं वो रैंडम हो जाती है. इसका मतलब वो रैंडम सिग्नल बन जाता है या रैंडम सीक्वेंस बन जाती है. एंड देयरफॉर फॉर दिस केस वी डोंट हैव एनी अदर गो, राइट. सो अभी देखते हैं कि इसमें हम क्यों एस्टिमेट की तरफ जाते हैं. then we have another thing, that suppose we calculate the power spectrum, the spectral characteristic may also change with time. क्योंकि आपका जो डेटा आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे कलेक्ट किया था, उसका स्पेक्ट्रम अगर आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डीएफटी रिलेशन फॉर एग्जांपल, तो वो अलग आएगा और थोड़ी देर बाद वो स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाएगी. इट मींस देयर आर चेंजेस रैंडमली इन द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो ऑफ द डेटा. देयरफॉर वी गो फॉर एस्टिमेशन नाउ. सो दो वी नीड एक्चुअली पीएचडी, जो अभी तक हमने पहले देखा था ऊपर पीएचडी का रिलेशन हमको कैलकुलेट वही करना है, लेकिन वो पीएचडी का अवेलेबिलिटी नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास में या तो डेटा लिमिटेड है या वो करप्टेड है नॉइस के थ्रू, इसके थ्रू वो रैंडम बन चुका है, या फिर हमारे पूरे डेटा सेट का जो हमने पीएचडी कैलकुलेट करना शुरू किया वो सेट टू सेट, मतलब एक सेट से लेके दूसरे सेट के बीच में उसकी स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो रही है. सो इन दैट केस our estimation has to be done and we call that as estimate of PhD rather than actual PhD. तो उस केस में हम कहेंगे हम PhD को estimate करके देखेंगे from a finite segment of noisy data. उस noisy data का एक finite segment हम ऑब्जर्व करेंगे और उस finite segment के ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे estimate, क्योंकि वो actual PhD नहीं है. तो ये कंसेप्ट है जो अभी हम पीरियोडोग्राम की मेथड्स पे भी लागू होता हुआ देखेंगे. ओके, अब मैं अभी इसके ब्रीफिंग में नहीं जाऊंगा, कुछ एक चीजें यहीं पर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते समय समझ लो. लेट अस कम बैक टू द पार्सेवल थ्योरम एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन. ये जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है दैट इज सम एडिशनल थिंग. ब्लैक कलर से जो ओरिजिनल प्रिंट आउट है टेक्स्ट का वो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द एनर्जी, राइट, एंड द राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल टू द एनर्जी बट कैलकुलेटेड फ्रॉम डीएफटी, जो अभी हमने लेटेस्ट इक्वेशन 8.103 में देखा था. ये इक्वेशन 8.103 अभी हम देख करके आ रहे हैं, वही इक्वेशन है. दिस इज इक्वेशन 8.103 एंड दिस इज द सेम इक्वेशन. So when I try to see the Parseval relation, this is already seen. Now suppose I go for a periodic signal and the periodic signal I make from xn. Xn of course is having say infinite duration, but one period of that may be considered as xpn. So we consider that as a periodic signal. So for a periodic signal, this left hand side expression, if I try to use, I can use it for a power calculation after dividing it by n, क्योंकि ये तो देगा energy. If I divide it by n, this becomes a power. So if I use this power relationship as this, then I can make use of this equation also on the right hand side, and therefore I need to divide it on the right hand side also by n. So it becomes 1 by n and this thing. Okay. So out of this mod of xk square divided by n, this is called the average power
and this average power, this is basically the PSD calculated through DFT. This is basically the PSD or power spectral density calculated through the DFT rather than DTFT. Okay. So this PXK as the this K index suggests here that अगर आपने इसमें K equal to 0 रखा या 1 रखा या 2 रखा, so PX0, PX1, PX2 all will be calculated by the corresponding X0, X1 and X2 mod square divided by N, where N of course is nothing but ये DFT का जो भी आपने N point लिया था वही है. So we can calculate this PXK, which is nothing but a mod of xk square divided by n. Now this can be plotted for all k. Suppose I want to plot this for some k, I need to just put the value of k here and find out the corresponding DFT there and divided by n. That's all. So this is how I can plot this pxk if the need be so. अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको plot भी कर सकते हैं. Now suppose there is a sequence xn which is having 3, -1, 0 and 2, and the corresponding DFT values are like this. So this example shows that can we verify the Parseval's theorem? That is, if I try to verify the Parseval's theorem, that is, if I calculate the power through the time domain approach, through the DFT approach, both approaches must give the same power P. So that's what they have done. So just look at the power calculation. यहाँ पे उन्होंने mod of xn square का इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कैलकुलेट करने के लिए 0 to n minus 1 इसका समेशन किया है. Because it's a 4-point sequence, we have 0 to 3 and therefore 1 by 4 of each of the mod xn value is squared now. So mod xn मतलब ये 3 हो जाएगा, mod में ये -1 का +1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा. So 3 square will be 9, 1 square will be 1 and 2 square will be 4, and therefore if I add them and divide by 4, then I get power. Okay, this is the time domain approach of calculating power. Now the same in frequency domain, what do we do is, in frequency domain we go for the mod of xk square and then divided by n. This will give one particular value of px calculated at that particular value of k, and therefore this pxk, if I try to see for all k, for example k being 0, 1, 2, 3 here, therefore for k equal to 0 I calculate it from x0 mod square divided by 4. So what is x0 mod square? 4 square, it means 16 divided by 4. Therefore the first value I get here as 4, and like that. Suppose I go for the second, this is having a value of 9 plus 3 square plus 3 square, so it's 9 plus 9, so it's under root 18. So under root 18 divided by 4, that calculates as 4.5. So like that I calculate every of the value of pxk for all k. For all k, it means for k equal to 0, k equal to 1, k equal to 2 and 3, we calculate it for all k. So this is the PSD which is being calculated for all k, because this is a kth version or DFT version, right? It's not the complete continuous frequency domain, it is a discrete time domain or discrete domain of frequency. Okay, so if I want to calculate the power, this I have calculated pxk. When I sum it up for all k now and then divided by n, that becomes 1 by n exk 0 to n minus 1. Therefore each of the value is substituted here, summed up and then divided by 4. That also gives 3.5. It means both the ways, if I calculate through the time domain approach or frequency domain approach, दोनों approaches से I get the same value 3.5. So power calculation is giving the same result. Another example is also there. We don't go for that example, but I just try to conclude it with some remarks that we can now be saying that we have learned there are 2-3 things. One thing is that the autocorrelation and
स्पेक्ट्रल डेंसिटीज हैव गॉट सम रिलेशनशिप। अगर वो सिग्नल एनर्जी का है, मतलब एनर्जी सिग्नल है, और वो सिग्नल पावर है, तो करस्पॉन्डिंग ऑटो कोरिलेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल और ऑटो कोरिलेशन ऑफ पावर सिग्नल हो जाएगा। और दोनों के जो डीटीएफटी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो या तो ईएसडी मतलब एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी रहेगा या फिर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी रहेगा। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए हम दो वर्जन्स देखे हैं। पहला पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम किसी डिटरमिनिस्टिक सिग्नल के लिए निकाल के देखे थे, और बाद में हमने देखा कि वो रैंडम प्रोसेस की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी सेम आती है। और दोनों केस में उसकी डेफिनेशन इक्वेशन नंबर 16.7 में जो दी हुई है वो क्लियर है, और वही ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने से भी आती है। ये दो तरीके हम यहाँ पर देख चुके हैं। ओके, एक और चीज हमने वेरीफाई की कि जब हम सेम चीज, मतलब फ्रीक्वेंसी के कंटिन्यूस वर्जन से या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी से हम अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो हम डीएफटी कैलकुलेट कर लेते हैं रादर देन डीटीएफटी, और उस केस में यूजिंग डीएफटी वो पीएचडी कैलकुलेट करने का तरीका अलग हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट pxk. So how do we calculate the phd using the dft version? Is this pxk. So pxk is the dft version of px e power j omega. And what is px e power j omega? Is the phd. Corresponding dft version is pxk. These things we remember and try to apply it for examples. Okay. Now when I say that we have to estimate, we will actually try to estimate it. हमने अभी तक ये यहाँ पर जो डिस्कशन किया था उसमें देखा था कि एक्चुअल पीएचडी तो हमें नहीं मिल पाएगी, हम उस पीएचडी का कोई एस्टिमेट तैयार करेंगे, और वो एस्टिमेट रहेगा एक फाइनाइट सेगमेंट का। जो भी हम डेटा उसके अंदर देखेंगे या डेटा सीक्वेंस देखेंगे वो एक फाइनाइट सेगमेंट की रहेगी, और उस फाइनाइट सेगमेंट की पीएचडी हम निकालेंगे। इसको हम कहेंगे एस्टिमेट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू distinguish how do we go for the methods of applying it, particularly for one of the way which is called non-parametric method, and the second will be parametric method. So non-parametric method में हम लोग क्या करते हैं पहले ये देखते हैं, और इसके पहले कुछ चीजें जो मैंने आपको क्लास में डिस्कस की थी, they were like discussing the bias, variance and consistency, frequency resolution, quality factor, and we did not discuss this figure of merit, but quality factor तक या variability तक हमने इसको डिस्कस किया था। And we also need to know what is the corresponding equivalence, or what is the corresponding notion when we start estimating the power spectrum from DFT point of view. Both are basically pointing to the same type of parameters. यहाँ पर एक फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये एस्टिमेटर है इसलिए हमें कुछ उसके एस्टिमेट को कंपेयर करने के लिए कोई पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। दोज पैरामीटर्स आर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ द एस्टिमेटर। एस्टिमेटर मतलब किसी चीज को आप जब एस्टिमेट करते हैं तो उसके लिए कोई जो फॉर्मूला बनता है वो एस्टिमेटर कहलाता है, या वो चीज जो एस्टिमेट हो रही है कभी कभी हम उसको भी एस्टिमेटर बोलते हैं। ओके, प्लीज। जस्ट अ मिनट।
जो है ये एस्टिमेटर के पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो सपोज एस्टिमेटर अगर अच्छा एस्टिमेट करता है तो वो कैसे कहलाएगा कि अच्छा एस्टिमेट है, ये कैसे पता चले कि वो एस्टिमेट अच्छा है या खराब है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स से उसको डिफाइन करते हैं। उसमें से एक पैरामीटर है बायस, एक है वेरिएंस, जो सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे दूसरी डेफिनेशन ये बायस और वेरिएंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो बायस क्या होता है? बायस डिफाइन करते हैं हम बीपी से, और वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट मतलब एनसेम्बल एवरेज वैल्यू, ये एक्चुअली एनसेम्बल एवरेज है, एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, व्हाट यू कॉल एज द मीन, जिसको आप रैंडम प्रोसेस रैंडम वेरिएबल के अंदर कैलकुलेट करते थे, दैट मीन वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट minus the actual value which is being estimated. So the true value, if it is equal to the mean, then this will be 0. Suppose the bias is 0, then this average value or ensemble average value will be equal to the true value. And in that case, our estimator will be said to be unbiased. Otherwise, it will be called as a biased estimator. Okay. Then we have the next thing, which is variance. Variance is defined by the definition expected value of p square, that is estimate square, expected value of p square, which is estimate p, minus expected value of estimate whole square. जैसा हम नॉर्मली रैंडम वेरिएबल में डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस होता है वेरिएंस आता है, उसी तरह से ये वेरिएंस भी कैलकुलेट किया गया। सो दीज टू थिंग्स, इसमें अगर वेरिएंस 0 हुआ तो क्या होगा? दीज टू थिंग्स विल बी इक्वल, एंड देयरफॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एस्टिमेट and expected value squared, both will be equal. So if the variance is 0, that is said to be good estimator. If the bias is 0, that is also said to be good estimator. अच्छे एस्टिमेटर की पहचान के लिए पैरामीटर तय हुए। ये आपके जैसे पहले केवल मीन या वेरिएंस हम जो बोलते थे उससे थोड़ा सा अलग है ना? जिस तरह से आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करते थे उसके मीन और वेरिएंस से, यहाँ पर एस्टिमेट को आप कंपेयर करेंगे इसके पैरामीटर्स को। अब एक बात और इसमें इंटरेस्टिंग है कि जो एस्टिमेट आपने कैलकुलेट किया है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस पर्टिकुलर सेट का एस्टिमेट किया है। जो डेटा सेट आपने ऑब्जर्व किया है, वो डेटा सेट अगर आप छोड़ के दूसरे डेटा सेट पे चले गए, क्योंकि देयर आर क्वाइट ए लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स पॉसिबल। अगर आप रैंडम सिग्नल को देखें तो दैट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल सैंपल फंक्शंस ऑफ टाइम, where situation is like this. Let me show it like this. It is a situation like this. We have either discrete time or continuous time. Let me draw it for the continuous time. Suppose I see or I observe the random process. This is one sample function of time, right? When I try to observe another function of the same process, maybe somewhat different. Again, I hope I have this sample function of time. So this is sample function of time number 1, this is number 2, and there are many of them, very large number of set of observed sample functions of time I see here, right, and all that. So when I try to see as a collection, I say it is ensemble or collection of all sample functions of time, right? And therefore suppose I am given this data set. This is continuous time. अगर discrete में हुआ तो उसके samples आ जाएंगे. That will be the only difference, right? It will be sampled version. So we have made the discrete time sequence available. No difference other than that. Other things will remain same. I mean, t n में convert हो जाएगा और continuous time से आप discrete time में चले जाएंगे और यहाँ पे sequence values आ जाएंगे. Okay. So when I say I am given this data set, तो उस केस में आपके पास में इस डेटा सेट का जो भी एस्टिमेट आपने तैयार किया है वो इस डेटा सेट के और इस डेटा सेट के एस्टिमेट से अलग हो सकता है। इसका मतलब एस्टिमेट भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल हो गया, राइट? सो इफ आई से
estimate being itself as a random variable, definitely that will also have some mean and its variance. And therefore, we talk about mean and variance of that. So this is what we call as mean. When the mean value is equal to the true value, then the bias is defined to be 0. When the variance we define in exactly the same manner that we have been using for random variable. So suppose I call this estimate as a random variable now, then that random variable will also have some variance. जैसे वहां पर x रैंडम वेरिएबल को आप गॉसियन रैंडम वेरिएबल बोलते थे और गॉसियन रैंडम वेरिएबल का एक वेरिएंस आता था, दैट वाज सिग्मा स्क्वायर. सो लाइक दैट इट आल्सो हैज गॉट a random variable notation, and therefore the variance definition applies here. So bias or estimate, bias of the estimate and variance of the estimate जो हमने देखा, ये दो parameters हैं. Now when I have variance and bias both becoming 0, then we have to see when it can become 0, particularly when we take a large data set. अभी आपने जो डेटा सेट यहाँ पे लिया, मान लीजिए ये कुछ फाइनाइट डेटा सेट था 0 to से n-1. अगर आप इस डेटा सेट को बढ़ा दें, so it will become a large capital value of n, right? So large n के लिए अगर आप इसको देखें तो उस केस में when n tends to infinity, in that case if the bias and variance दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं, तो उस एस्टिमेटर को हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहेंगे. अब 0 अभी तो नहीं है वो फाइनाइट सीक्वेंस के लिए, लेकिन जब n को बढ़ा दें और वो 0 हो जाए तो फिर हम उसको कहेंगे वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. ओके, नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन. पहले भी आपने फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन वर्ड डीएफटी के एस्टिमेशन टेक्निक्स में या डीएफटी के पावर स्पेक्ट्रम एस्टिमेशन टेक्निक में देखा था. सो द सेम डेल्टा एफ, basically what is delta f or what is frequency resolution? It is the smallest difference in frequencies that can be reliably detected. मान लीजिए दो साइनसोइड्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत डिफरेंस माइन्यूट है. आप दोनों को अभी सेपरेटली रिकॉग्नाइज अगर कर पाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी, अगर आप f1 को f2 से सेपरेट आउट कर पाते हैं, ये कब की बात है? जब आप उसके पावर स्पेक्ट्रम का एस्टिमेशन करके प्लॉट करें. तो मान लीजिए एक प्लॉट कुछ ऐसा आ रहा है और एक प्लॉट कुछ ऐसा आ रहा है, और अगर ये दोनों में सेपरेशन है तो आप इनको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं यूजिंग योर फाइनाइट व्हाट यू कॉल मैनिपुलेशन ऑफ द और फाइनाइट सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड्स, राइट? अगर आप ये इसमें कहीं ओवरलैप आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी. इसका मतलब देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज. इसलिए कहते हैं कि इनका जो मेन लोब का विड्थ है, वो मेन लोब विड्थ इज रिस्पॉन्सिबल for this frequency resolution, and the frequency resolution is the smallest difference that we can say which is there or required, right? As that will be called as frequency resolution. So the smallest difference between f1 and f2 that we can recognize, so f2 minus f1 is defined as delta f. So this delta f is the difference that we can reliably determine through the power spectrum estimation or through our estimator. Okay. Now what is quality factor? Quality factor में ऊपर अगर आप देखें तो जो रेशो है, इसमें न्यूमरेटर जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर है. एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, ये उसी एस्टिमेट का स्क्वायर है, और नीचे है वेरिएंस. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर करके डिवाइड किया वेरिएंस से, तो जो भी रेशो आ रहा है वो क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा. और क्वालिटी फैक्टर का जो इनवर्स है वो वेरिएबिलिटी कहलाता है. तो ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं, कुछ जो पैरामीटर्स की डेफिनेशन है, उनमें से हम बायस और वेरिएंस तक तो फिर भी देख सकते हैं. बाकी फिर आगे नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स के लिए सब चीज़ों के कैलकुलेशन बड़े टफ हो जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले ही देखने होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके एटलीस्ट बायस और वेरिएंस के फॉर्मूलों को एक बार गौर करें, ताकि ये पता चलेगा कि वो एस्टिमेटर जिसको आप एक पर्टिकुलर मेथड से बोल रहे हैं, आने वाला जो फॉर्मूला रहेगा, अप्लाई होने वाला फॉर्मूला जो रहेगा, वो एस्टिमेटर किस तरह का है, अनबायस्ड है कि नहीं, राइट? या उसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो कैसा आ रहा है, या फिर आप उसके कंसिस्टेंट होने को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं.
उसका वेरिएंस अगर जीरो नहीं हो पा रहा है विथ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर उसका बायस जीरो नहीं हो पा रहा है विथ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। So let us go for some of the methods. In a brief review of the methods, I would first start with the periodogram. And the periodogram is basically having some notion or some connection with PSD. Okay, it's not exactly the PSD, but has connection with PSD. Okay, now we know already the PSD. What is the PSD of an ergodic random process? What is meant by ergodic random process? When I say that the time average of the random process is equal to the ensemble average, this is the ensemble average, this is the time average when the two averages are equal. इसका मतलब अगर हम फिर से random processes के बारे में देखें, तो मैं इस random process के averaging को दो तरीके से देख सकता हूँ। अगर मैंने इसको with time, along time इसका averaging किया, ये कहलाएगा time averaging, है ना, in this direction. Okay, so दूसरा एवरेजिंग मैं कर सकता हूं इसका इस डायरेक्शन में। When I try to see at one particular time the sample value of all the sample functions of time, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो जो भी वैल्यू इसकी आ रही है, इस टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटरवल को या टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैंने t1 अगर डिसाइड किया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इन सब का एवरेज में ऐसे भी कर सकता हूँ। So in this direction also I can take average. When I take the average in this direction, it is called ensemble average. I know. When I take the average in this direction, this is called time average. This also I know. So when the time average and this ensemble average, they become equal, I say that the process is ergodic in the average sense, or ergodic in the mean sense, right? And then there is also another definition which says ergodic in the uh, autocorrelation sense. So we don't go into the detail of that. हम अभी केवल ये याद रखना चाह रहे हैं कि एर्गोडिक प्रोसेस का यहाँ पे हमें फायदा क्या मिलेगा। वो ये मिलेगा कि जब हम एंसेम्बल एवरेज की बात कहीं पर आएगी, तो उसको हम टाइम एवरेज से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, बिकॉज इन दैट केस एर्गोडिक प्रोसेस के केस में ये दोनों एवरेजेस बराबर ही आते हैं। So with that notion, if I start with the PSD from the other point of view, देखिए यहाँ पे जो PSD लिया है वो autocorrelation point of view से start किया है। So when I try to say that RxM, this RxM we have already defined as autocorrelation of a power signal, where we knew that ये थोड़ा energy type of part है which is divided by 2n plus 1, so it becomes a sort of energy divided by time duration, and therefore it's a power, and therefore this becomes a autocorrelation of power signal. So this we have already seen, which has been utilized here. This is the DTFT version of the same. So this is nothing but DTFT of this RxM. RxM is the autocorrelation of power signal. Right? Just last one. So I take this again. I'm sorry to take a break. Okay. So what is periodogram? Let us try to see it. What is periodogram, and how we have gone to the name of periodogram? What do you mean by periodogram?
ये हम अभी इस मेथड में देखेंगे. Periodogram is one of the method which is non-parametric method. So there will be a parametric method also, or set of parametric methods and set of non-parametric methods. So these are also called classical methods. पहले यही methods को ज़्यादातर यूज किया जाता था. इसके बाद फिर parametric methods आई जिसमें कुछ मॉडल के थ्रू पावर स्पेक्ट्रम एस्टिमेशन चालू हुआ. तो अधिकतर कुछ ओल्ड बुक्स में केवल नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स ही डील किया हुआ. ओके, नाउ पीरियोडोग्राम इज वन सच मेथड, और बाद में नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स में इसी के कुछ और मॉडिफाइड वर्जन्स आते चले गए जो अभी हम देखेंगे कि काफी आसान है समझना उसका कंसेप्ट. लेट अस स्टार्ट विथ द पीएसडी which is of a WSS wide sense stationary ergodic random process. वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस के बारे में मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अभी हमने केवल एर्गोडिसिटी का फायदा उठाना है, अदरवाइज मैं इसके डिटेल में अलग से कभी जा सकता हूँ. तो अभी रैंडम प्रोसेस के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि xn इज अ काइंड ऑफ दैट सैंपल फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, which is known for all n. All n, when we say, it is valid for minus infinity to plus infinity. When I take the corresponding autocorrelation for that and take the DTFT of that, it becomes PSD. So PSD is therefore equal to this, and this is equal to this. Okay. Now what is the actual situation? Actual situation is कि जब आप देखते हैं xn को तो आपके पास में इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, आपके पास में केवल एक फाइनाइट सेट का डेटा है. जैसा मैंने कहा था, एक रेस्ट्रिक्शन है इसमें. जब आप डेटा सेट देखते हैं, मान लीजिए सीस्मिक सिग्नल का आपको 0 to n-1 पे अवेलेबल है. सो यू स्टार्ट विद दैट इंटरवल एंड ट्राई टू figure out that what may be the spectrum correspondingly of that signal, right, or data set. So that we call as estimation now. So this Rx cap m or Rx hat m is basically the estimate, right? And for this estimate, there will be some bias. For this estimate, there will be some variance. So we'll try to see what are the bias and variances of this particular estimate. So this estimate, how do we calculate it? Because this is a finite data, therefore it will exist only from 0 to say capital n-1. इसलिए हमने इसको सारे प्रोडक्ट को n0 to n-1 तक लिया, और चूंकि नंबर ऑफ सैंपल्स अब केवल n है इसलिए उसको n से डिवाइड किया. और यहाँ पर अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का कोई सवाल नहीं है क्योंकि हमारे पास में डेटा ही फाइनाइट इंटरवल के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये भी अपना मीनिंग लूज कर देता है. सो दिस इज कॉल्ड नाउ एस्टिमेट ऑफ ऑटो कोरिलेशन. So we can call this is autocorrelation estimate. Of course, we have started with a random process, and therefore it's an autocorrelation of a power signal as well, right? Because we have started with power signal class as a random signal, so ये autocorrelation estimate कहलाएगा of power signals, Rx cap or Rx hat m. Now ऑटो कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम यहाँ पे प्रूव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है. वो ये देखना है कि ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू फॉर पॉजिटिव वेरिएबल m एंड फॉर नेगेटिव वेरिएबल m दे आर इक्वल. इट मींस दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन बिकॉज दिस फॉलोज अ सिमेट्री और इवन सिमेट्री, एंड देयरफॉर ऑटो कोरिलेशन, सपोज आई स्टार्ट प्लॉटिंग दैट आई गेट सिमेट्रिक प्लॉट्स. सो दिस हैज बीन रिकॉल्ड from the theory of autocorrelation, से properties of autocorrelation, कि यहाँ पर अगर हम substitution करें m का minus m से और फिर इसको rearrange करें with the new variable defined, we will find that this Rx cap m is also Rx cap minus m, and therefore what will happen, this is basically the Rx cap m, also valid for Rx m and Rx minus m, both are now, because it's applied here for limited data, therefore I have modified it to that. So what will be overall Rx cap m? It will be same as Rx minus m for all values which are going from 0 to minus m-1 now, because we have expected this to exist for n between 0 to n-1 here and n between minus n-1 to 0 here. So these two definitions are same basically. With the property, we come to know that this will also be a symmetric function like that.
So when I try to plot this versus m, say for example, then it will be a plot like this only. It will be a symmetric function. So when I say that if I plot this Rxm, right, versus m, उसका मीनिंग ये है कि ये एक सिमेट्रिक फंक्शन ही आएगा. Okay. Now, if I take the DTFT of whatever I have been able to calculate, see, I have been able to calculate this Rx cap m rather than Rxm. Rxm was the original thing which we required, and the DTFT of that was PSD, which we required. But now, because we are left with only finite data set, therefore we have the estimate of autocorrelation. This is not exact autocorrelation, this is only estimate of autocorrelation, because the finite data set is there, finite time data set is there. इसलिए इसका जो corresponding DTFT आएगा वो भी अब PSD नहीं होगा, वो PSD नहीं कहलाएगा, बल्कि वो उसका estimate कहलाएगा. Okay. And therefore now we define the periodogram as the estimate of PSD. So what is periodogram? It will be called as the estimate of PSD. Because our data set is limited, therefore we have autocorrelation, which is of course of a finite data set, and therefore corresponding DTFT if I try to take, then it will be called the periodogram. Okay, so periodogram मतलब क्या हुआ? उसका DTFT हुआ. किसका? Rx cap m का या Rx hat m का. So what is Rx hat m? Is of course defined through xn here. Okay, so when I try to take the DTFT, I know that Rxm and Rx minus m, they are equal, and therefore I substitute the values, whether it goes from minus n minus 1 to plus n minus 1, I have the same Rxm value valid, and therefore I take the DTFT of that by multiplying it by e power minus j omega m and sum it up over the available values of m, which are now from minus capital N minus 1 to capital N minus 1. So we can express this periodogram in DTFT version like that. Right. And then let us try to see one more simple conversion of this DTFT version of periodogram into something else. Okay, what is that something else? Suppose I define a sequence xn in the limited time between 0 to n minus 1 with a finite data set as a new sequence. Suppose I call this as a truncated sequence. So when I have truncated sequence xn now coming in picture, I can replace everywhere wherever my xn was there, वहाँ पे मैं अब xn का use कर सकता हूँ. Okay, so let me see where it was earlier appearing here. xn was appearing here, and we knew that xn is a finite data set available, and therefore now we are more truthful in a sense that we have truncated the sequence with a corresponding window. And suppose we make a truncated sequence xn by multiplying it by a window function, where we know that the window function is of course 1 between 0 to capital N minus 1. So when I multiply it by a window function like the windowing technique we learned in the FIR filters, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप windowing करें तो you get a truncated sequence. So this truncated sequence is now utilized in the estimate of autocorrelation, that is Rx cap m. So Rx cap m, which is defined like that here, now instead of xn मैं उसको xn n बोलता हूँ और xn minus n को अब x capital N n minus n suffix capital N n minus n बोलता हूँ. So rather than xn I use this. When I try to see this overall summation from minus infinity to plus infinity, I can just compare this with this relation. It was having a summation from 0 to n minus 1. So when I take a truncated sequence, then I can go for minus infinity to plus infinity. So my choice is now enlarged. मेरा जो time span है वो मैंने enlarge कर दिया. Now the left hand side summation is nothing but a convolution summation of the sequence xnm and xn minus m. Look at the difference. Unless this limit is minus infinity to plus infinity, I cannot say that this is a convolution. Therefore, before I do this, I need to first make sure that the summation goes from minus infinity up to plus infinity and not less than that. When I do that, the convolution of this particular
X and M with the folded X and M, when I try to convolve, the convolution gives the corresponding autocorrelation. So this is the autocorrelation calculation through convolution. That's what we say. Autocorrelation calculation through convolution. So when I take the DTFT of this, because we had been discussing the DTFT, the PSD, and the PSD we call as the estimate of PSD now. So what becomes the periodogram under this observation? That correspondingly PSD will be the DTFT of this and DTFT of this, because the convolution is there in time domain, and therefore we will have frequency domain multiplication, and therefore the corresponding frequency domain multiplied together, and therefore this becomes mod xn e power j omega square. So what do we get as estimate? What you call as periodogram. The periodogram, which is of course a DTFT version now, is having correspondingly this expression 1 by n mod of xn e power j omega whole square, where we have of course used this relation xn e power j omega as the DTFT of xn, right? And the DTFT of xn of course will go from minus infinity to plus infinity, but because this is equal to xn only between 0 to n minus 1, otherwise it is 0, and therefore ultimately when we substitute xn here, it becomes 0 to n minus 1 xn e power minus j omega. Is it clear? So I think this makes a sense. Okay. I'll take a 2 minutes break. We'll come back.
we say the parallelogram from DTFT point of view, we we say that it is calculated through DTFT of a truncated sequence, and truncated sequence is xnn, and DTFT of that is xn e power j omega. We take the mod of that, square it, divided by n. This is what we call as periodogram or the estimate of PSD. Let us not forget कि periodogram मतलब PSD का ही estimate है. Okay, so this will be called as estimator or a formula for calculating the PSD, which is nothing but estimate of PSD, which is nothing but periodogram using DTFT version. Now, correspondingly, DFT version, if I try to go, then I can directly see that this mod xn e power j omega, when sampled in frequency now, will give DFT. So जैसे DTFT को सैंपल करने पे DFT हो जाता है, वैसे ये mod xn e power j omega स्क्वायर का जो k पे वर्शन आएगा, मतलब DFT के लिए जो इंडेक्स होता है वो k होता है, तो ये xn k में कन्वर्ट हो जाएगा. So the same thing will be now converted into this. So what is the PSD estimate in DFT form is this. It means what is the periodogram in DFT form. So this is the same periodogram, but now it is in DFT version. Okay. So DTFT and DFT, two versions are there for calculating the periodogram. Now we just try to see what is the bias of the periodogram. For bias, we have some systematic relation, derivation, therefore I just try to complete it once, and then we'll try to see what is meant by that bias and whether the corresponding estimate, जैसे अभी हमने periodogram का estimate जो निकाला है, वो अपने आप में biased है या नहीं है. So we will calculate the bias, of course, by calculating the expected value first. So first we try to calculate the expected value of autocorrelation. हमारा पहले ये एस्टिमेट देख लें हम कि ये कितना सही था, तब इसका फिर पीएचडी लेंगे, और जब पीएचडी लेंगे तो फिर वो पीएचडी भी उतना ही सही होगा जितना ये सही था. तो क्योंकि वो पीएचडी बेसिकली इसी का हुआ है ना, और पीएचडी जब आप इसका लेते हो तो आप उसी को बोलते हैं पीरियोडोग्राम. इसका मतलब पीरियोडोग्राम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑटो कोरिलेशन रादर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेट पी. मतलब अभी आपको एक्चुअली बायस कैलकुलेट करने के लिए चाहिए एस्टिमेट ऑफ px e power j omega px cap, or what you call as p periodic or periodogram. So ये periodogram का आपको estimate चाहिए कि periodogram आपने जो अभी estimate of PSD बताया है वो estimate कितना actual PSD के बराबर है. Actual PSD क्या है? Actual PSD ये थी जो आपने starting में देखी थी, ये actual PSD है. एक्चुअल पीएचडी की वैल्यू के वो कितना करीब है या नहीं है, ये इससे बायस से पता चलेगा. ओके, सो नाउ फॉर दैट एक्चुअली मस्ट वी गो फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आरएक्स कैप एम. व्हाट इज आरएक्स कैप एम? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn माइनस m एंड wn माइनस m. ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जो xn n हमने यहाँ पे सीक्वेंस बोली थी वो अब प्रोडक्ट होगा xn और wn का. अगर हम wn को एक रेक्टेंगुलर विंडो ले लें जिसकी वैल्यू 1 है बिटवीन 0 टू कैपिटल N माइनस 1 फॉर ऑल n, राइट, बिटवीन दिस रेंज एंड 0 अदरवाइज, तो ये रेक्टेंगल विंडो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बन जाता है xn n. सो दिस इज सेम एज xn n. सो दिस xn n वी हैड सीन अर्लियर. इस इक्वेशन में हमने ये देखा. यहाँ पर ये जो आपने सीक्वेंस देखी थी ये 0 टू n माइनस 1 आपने तब देखी थी जब आपने इसको ट्रंकेट कर दिया था, ये xn n आपने कर दिया था. सो दिस वाज बेसिकली लाइक दिस. सो रादर देन 16.19 it should have been 16.23. So this can be written as xn n, and therefore this part will give xn n minus m. Okay, xn n minus m. So this will be xn n minus m. When I try to take the expected operator operated over this sequence,
I know that Wn is a constant, therefore expected value of this will not be there. Expectation operator will operate on this, and this expectation will be called as autocorrelation, because autocorrelation of a random signal is having ensemble or expected value of the product of, expected means mean value of the product of xn and xn minus n. So it's a second order, right? ऑटो कोरिलेशन जैसा हम करते थे टाइम डोमेन में, तो इसको हम प्रोडक्ट लेने के बाद में सम करते थे टाइम पर, और अभी हमने क्या माना है कि ये टाइम पर जो एवरेजिंग हुआ है वही एनसेम्बल एवरेजिंग के बराबर है। तो ऑटो कोरिलेशन सेंस में अगर आप इसका ऑटो कोरिलेशन कैलकुलेट करें फ्रॉम द एनसेम्बल ऑपरेटर, तो एनसेम्बल ऑपरेटर मतलब ई ऑपरेटर जो था वो आप ऑपरेट करें, तो ये आरएक्सएम की दूसरी डेफिनेशन है। अर्लियर जो हमने डेफिनेशन यूज की थी उसमें टाइम एवरेजिंग हुआ। So now this RxM we substitute in place of this expected value. Therefore, this is taken out. Inside what remains is Wn, Wn minus n. Suppose I call this particular product of Wn also with Wn minus m and summed up for minus infinity to plus infinity as some value Rwm. Now look at this. This is time domain, right? Because this is a well-defined function, and this is a random. Therefore RxM is through expected value. तो हम यहाँ पे दो का यूज देख रहे हैं, इसके ऊपर जो अप्लाई हुआ है दैट्स अ टाइम डोमेन, इसके ऊपर जो अप्लाई हुआ है दैट्स ए ensemble operator, and therefore it is a random signal which has been treated here. Okay, so ultimately the result will be RxM into Rwm. If I define this Rwm as this particular value Rwm, then I can see that this for minus infinity to plus infinity looks like a convolution again, and the convolution becomes a convolution of Wm with W minus m. So this convolution gives Rwm. So that's the autocorrelation of the window sequence. So for the rectangular window, we calculate Rwm, which is equal to now Wbm. Why? Because this convolution is nothing but of a rectangle sequence with a rectangle sequence. Therefore, will give a triangular sequence. So that triangular sequence will be n minus mod m, because this mod m shows that it will be again symmetric. It will be symmetric. So a rectangle window, suppose I consider as this from say 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, then this is convolved with another 0 to n minus 1 sequence. So the two rectangular sequences when convolved, that the triangular sequences, the resulting triangular sequence will go from minus of n minus 1 to plus of n minus 1, and therefore that will be a triangular sequence, right? Exactly like this. Okay. And so on. So this between minus of n minus 1 to plus n minus 1, this will be a triangular sequence, and this rectangular window which has been defined earlier as this window, the corresponding autocorrelation becomes like this. Okay. Particularly the convolution, if you try to see, that will not be from minus n minus 1 to n minus 1, it will be rather 0 to 2n minus 1, something like that. But the autocorrelation will always be a symmetric function, right? Symmetric function मतलब Rwm अगर आपने कैलकुलेट किया तो Rw minus m will be same as Rwm. That's what we mean by symmetric autocorrelation. So that comes out like a triangular sequence. So two rectangular sequence convolution. Ultimately, when you fold it, also it's a rectangular sequence. So ultimately, it is the rectangular sequence convolved by rectangular sequence only. उसमें केवल ये हो जाएगा, ये folding हो जाएगा, तो this will become minus n minus 1, and this will become 0, right? So after folding, when we convolve the two, that is, say this is Wm, then this is W minus m. When after folding we convolve the two, that convolution goes from minus n minus 1 to plus n minus 1, and therefore that is nothing but this
another window we call, and this new function like a triangular sequence is called Bartlett window, triangular or Bartlett window. Okay, so if I substitute here this RWM which I calculated through this convolution, I now get RWM equal to WBM. Therefore, substitute this WBM here, and therefore this becomes expected value which we started with. Expected value of Rx cap M equal to Rxm into RWM, and RWM is nothing but WBM. Okay. So the two things are now put together. Expected value of Rx cap M was nothing but the uh, expected value of the estimate of autocorrelation, or expected value of autocorrelation estimate. So that is now a triangular sequence multiplied by Rxm, and therefore it's a triangular sequence multiplied by Rxm, and it is between mod m less than or equal to m minus 1. When I try to see the expected value on the left hand side for capital N tending to infinity, I am checking whether the estimate is a good estimate or not. It should have been exactly the true value of it, and it comes out to be that. अगर आप इसमें n infinity करें तो उसको लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आप देखेंगे, if I take common say n in the numerator and denominator also, this becomes 1 minus mod m by capital N, and then if I say let n tending to infinity, then I say that it is becoming 1, right? So that 1 multiplied by Rxm will give this. It means for n tending to infinity, the autocorrelation estimate is a good estimate, or we can call this that it is unbiased estimator. Though it is biased because exactly this estimate is not equal to the exact value Rxm. Rxm का ये estimate था, तो ये estimate उसके बराबर तो नहीं है, इसका मतलब bias 0 तो नहीं है, पर ये unbiased estimator है जो asymptotically unbiased होता है. इसका मतलब for n tending to infinity, at least that is coming down to Rxm value, the true value, and therefore this is also called asymptotically unbiased. तो वैसे तो unbiased नहीं है ये, जब bias 0 होता है तो हम उसको unbiased भी बोलते हैं, लेकिन ये asymptotically unbiased है. इसका मतलब n tending to infinity पर इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो रही है. अब हम इसका DTFT लेते हैं. इसका मतलब अब हम आते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पीरियडोग्राम पर. तो हम जब पीरियडोग्राम का एस्टिमेट लेते हैं तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Rx कैप m यूज हुआ है. Rx कैप m मतलब ये वाला जो फंक्शन था वो यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए हमने पहले इसको कैलकुलेट करके रख लिया ताकि हम इसका वक्त आने पे इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दें. सो दिस इज नथिंग बट Rxm और WBM product, and then this whole expected value we have substituted, and then this summation is there because this is the nothing but the estimate of PSD and its average value. So this is nothing but periodogram and its average value. So we are trying to calculate the expected value or the average value of the periodogram calculated. Therefore this is expected operator which is going inside, and therefore it's now being operated over autocorrelation estimate, और autocorrelation estimate का जो expected value है वो हमने पहले calculate करके रखा है, that is equal to this. So when we substitute that in that way, we find that this is nothing but the DTFT of this whole product. This whole expression is nothing but the DTFT of the product, WBM into Rxm. Now, therefore, corresponding Fourier transform should convolve. Therefore, WB e power j omega will convolve with the Fourier transform of Rxm, which is nothing but the actual PSD. Actual PSD. So, actual PSD being convolved with this will give the expected value of the periodogram. So, expected value of periodogram ultimately comes out to be WB omega convolved with Px e power j omega. Now, what is WB e power j omega? WB e power j omega is nothing but the Fourier transform of WB n, right? Because WB e power j omega is nothing but the Fourier transform or DTFT of WBn. So what is WBn or WBm? WBm itself is a triangular window or Bartlett window.
right? So if I take the Fourier transform of that, rather than taking the Fourier transform of this, we can approach it differently. यहाँ पर चूंकि ये दो sequences का convolution है after taking the inversion, I can take the Fourier transform of this multiplied by Fourier transform of this, and that becomes mod w e power j omega square, because one is the conjugate w e power j omega and another is w e power j omega. So conjugate के साथ में जब original w e power j omega multiply हुआ, so that becomes mod w e power j omega. It means if I try to say what is w e power j omega, right? W e power j omega, w e power j omega is nothing but sine omega n by 2 divided by sine omega by 2. So this has been seen a number of times. We have seen that the rectangular sequence has got the Fourier transform as the bracketed term inside. इसका जो argument है, वो argument nothing but the DTFT of a rectangular sequence. So when I try to take the square of that, because of this mod square, when I try to take the square of that, it becomes WB e power j omega. Right? So this term is basically W e power j omega out of that. The DTFT of the window sequence, which is called rectangular window, and rectangular window goes from 0 to capital N minus 1. So this we substitute and we try to see that because it is a multiplication or sorry convolution with a term like this, exactly we say that this expected value of parallelogram is at least not equal to px e power j omega. It is something like convolution when we convolve it, and then the result will be not equal to, of course, px e power j omega, and therefore expected value is not equal to the true value. इसका मतलब expected value of parallelogram is not giving the true value of PSD, क्योंकि आपने ultimately किसी भी एस्टिमेटर का बायस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो था, सपोज आई कैलकुलेट द बायस ऑफ सम एस्टिमेट P cap or P hat, then this is defined as expected value of the estimate minus the true value of that. So true value of that is P, and I used to say that suppose bias is 0, then these two will be equal. Then the expected value of the estimate will also be equal to the true value. Now the expected value of the estimate is not being equal to the true value, therefore it is not having bias equal to 0, or it is not unbiased. Right? Now, whether it is asymptotically biased or not, we can see that it means suppose n को हम infinity करें तो क्या फिर ये उस केस में asymptotically unbiased है? तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसके पर्टिकुलरली इस शेप को देखें, इस सिंक शेप में लगभग सिंक शेप जैसा दिखने वाला एक, हालांकि एग्जैक्टली वो सिंक नहीं है, लेकिन इस सिंक शेप जैसा दिखता है। ये हमने कई बार इसको FIR विंडो डिजाइन में भी लिया है, और ये यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आती है जीरो क्रॉसिंग पर, ये 2π/n आती है। इफ यू रिमेंबर, for a sequence 0 to n-1 rectangular sequence, the DTFT is plotted like that. So this particular argument is plotted like that. It means this is W e power j. The value of that here is n. Okay, and the zero crossings are at 2π/n. Okay, now when I try to see this n being infinity, what will happen? This zero crossing will near, right, will come nearer to this origin, and this n also will become infinite, and therefore it is now approaching delta omega. So when I take this n tending to infinity, this function WB e power j omega becomes 2π delta omega itself. So this convolution is now between px e power j omega and 2π del omega. So the convolution is replaced by the convolution of 2π del omega and px e power j omega. And now I see जो भी फंक्शन हम डेल्टा के साथ में कन्वॉल्व करते हैं वो फंक्शन इटसेल्फ रिजल्ट होता है. If I have x of t convolved with delta of t, then the result is x of t. So the same function is right. This is what the result of the convolution with delta function. So this property we remember, and therefore this comes out to be this.
Now I see that when n tends to infinity, this expected value of my estimate becomes the original value or true value. Therefore, I say that this is the case of unbiased estimator, of course, but asymptotically, right? Asymptotically, because we are letting n to infinity, right? Then it is giving the actual value. Therefore, it is called as asymptotically unbiased. Then we don't have any proof available for this particular thing. I'm sorry, but suppose I go for variance and how to remember that whether the variance of periodogram is what. So from different books I have checked it. They are giving directly the formula, and the formula is uh, variance of the same estimate is equal to the original PSD value squared. Original PSD or true value squared. So the variance comes out to be original PSD value squared. Now naturally, variance is now observed for n tending to infinity. And of course, this n tending to infinity must have been put here. So this is the result. But because this variance of the estimate is not equal to 0, we say that the variance, because it's not equal to 0, it is not consistent. Because if the variance goes to 0, as n tends to infinity, and if the uh, bias also goes to 0, if n tends to infinity, इसमें bias तो 0 हो रहा है, bias तो 0 हो जाएगा क्योंकि आप estimated value के expected value में से जब इसको subtract करेंगे तो bias 0 हो जाएगा asymptotically, क्योंकि वो unbiased हो जाएगा. लेकिन इसका ये जो variance है, ये variance 0 तब भी नहीं होगा, इसलिए कुल मिला के ये consistent estimator नहीं कहलाएगा. एक हो रहा है लेकिन दूसरा satisfy नहीं हो रहा. So like that we check the parameters of an estimator. Now, frequency resolution of the periodogram. What we have done? Actually, we want to separate out or distinguish between two particular frequency contents. तो ये आप DFT के लिए या आपने फिल्टर डिजाइन के लिए, FIR फिल्टर डिजाइन के लिए भी जो विंडोज देखी थी, उसमें पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर विंडो के लिए जो ट्रांजिशन बैंड था, that was equal to 0.9 by n, where n is the length of the FIR filter. This 0.9 by n was delta f there. The same delta f will be called as the resolution of periodogram. वही ट्रांजिशन बैंड अब periodogram का resolution कहलाएगा. So this is frequency resolution because we have used the rectangular window. Okay. Then the quality factor is calculated. That's coming out to be 1. Okay. That's all. Now we go for modified periodogram. What is modified periodogram? जब आप रेक्टेंगुलर विंडो जो आपने यूज किया था उसकी जगह एक नॉन रेक्टेंगुलर विंडो लेना. आई रिपीट, अभी आपने ऊपर सारे कैलकुलेशन में रेक्टेंगुलर विंडो का यूज किया था. अगर आप उसकी जगह एक नॉन रेक्टेंगुलर विंडो ले लो, अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे कौन सा लेना है. हो सकता है हैनिंग लें, हो सकता है हैमिंग लें, बार्टलेट लें या कोई दूसरा. तो अगर एक नॉन रेक्टेंगुलर विंडो आपने यहाँ पर ली है तो अब वो कहलाएगा मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पीरियोडोग्राम एंड मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम. अब हम देखते हैं यहाँ पे इससे फर्क क्या आता है. यहाँ पर हमने जो मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम लिया है उसको नॉर्मलाइज किया है. नॉर्मलाइज इसलिए किया है क्योंकि इसकी वैल्यू को u से डिवाइड किया गया. मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट पहले की इक्वेशन जैसा ही है. अगर आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो ये इक्वेशन सेम ही है. ये इक्वेशन सेम है और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म्स को ले लिया था, इसलिए जो पीरियोडिसिटी इसका जो DTFT आया था वो भी सेम था. तो अभी आप इस इक्वेशन को यहाँ पर अगर देखें तो मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम में ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सीक्वेंस विद सीक्वेंस ऑफ विंडो ये तो सेम है. केवल एक फर्क है कि यहाँ पे विंडो सीक्वेंस की जगह सॉरी रेक्टेंगुलर विंडो सीक्वेंस की जगह आप कोई दूसरा विंडो सीक्वेंस लीजिए.
That is the only difference. So we divide the whole thing by u. And what is u? U is nothing but that window squared and summed up for all values between 0 to n minus 1 and then divided by n. इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका जो स्क्वायर करने के बाद में 1 by n जो ले रहे हैं, ये एक तरह से एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद में n से डिवाइड करने के बाद में एक पावर हो गया। तो हम पावर ऑफ दैट विंडो मतलब u से उसको डिवाइड करके नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जो पीएचडी है, ये पीएचडी के कैलकुलेशन में अगर आपने विंडो की पावर से उसको डिवाइड कर दिया तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तब केवल सिग्नल पावर के कारण जो कुछ वेरिएशंस आएंगे वही अपीयर होंगे। तो आप इसको u से डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ दिस इज ए कांस्टेंट, particularly it has been used because we want the estimator to be asymptotically unbiased. asymptotically का फिर से वही मीनिंग है, n tending to infinity के लिए ये unbiased हो जाना चाहिए। So now what is the modified periodogram bias? Modified periodogram bias में we take the estimate expectation value, मतलब expected value of the estimate। अब यहाँ पर ये m जो है मॉडिफाइड के कारण आया है सफिक्स, तो मॉडिफाइड एस्टिमेट विल बी pm cap e power j omega, pm cap e power j omega, and this will be nothing but the expected value operated over this formula on the right hand side, and therefore this becomes expected value of p periodic e power j omega, क्योंकि इसमें p periodic e power j omega कॉमन है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, so this is nothing but the expected value of that and 1 by u. So the only difference between this formula and the earlier formula कि यहाँ पर केवल ये u आया है, so it is expected value of the earlier thing divided by u. Then we have calculated earlier the expected value of the estimate of periodogram, तो वही चीज यहाँ पर px e power j omega mod w e power j omega square से कन्वर्ट होगा, यही चीज यहाँ पर इसकी जगह रख दी। तो अब देखा कि इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो पर्टिकुलरली w e पावर j ओमेगा स्क्वायर d ओमेगा, अगर आप देखें तो ये कन्वोल्यूशन में आपको जो इंटीग्रल आएगा उसमें आप अगर इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड में आप इस इक्वेशन के अंदर जा करके देखें, इसका ये nu अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें और 1 by nu यहाँ पे करते हैं, अगर इस u को इधर लाते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाता है 1, राइट। इफ आई ब्रिंग दिस u हियर एंड 1 by nu से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1, एंड देयरफॉर this being 1, I say 1 by nu into wn square being 1, now I can use the Parseval theorem and say this 0 to n minus 1 summation of w1 and w square n will be equal to 1 by 2 pi integral minus pi to pi mod w e power j omega square d omega 1. So with that notion, we make Parseval's theorem available here and make the left hand side time domain and right hand side frequency domain. और इसको अगर आप रिप्लेस कर दें, यहाँ पर देखें कि इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में इसका क्या होता है, सो दैट w e पावर j ओमेगा डिवाइड बाय nu फॉर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी हमने ऊपर देखा ही था, ये डेल्टा ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये डेल्टा ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए मॉडिफाइड जो पीरियोडोग्राम है दैट विल बी एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, क्योंकि इसमें जो पार्ट है वो यही वाला पार्ट है। उस केस में ये w e पावर j ओमेगा स्क्वायर के लिए आप जब ये 2 पाई डेल ओमेगा ले लेंगे तो यहाँ पर फिर से ये कन्वॉल्व जैसे आपने पहले किया था वैसे ही कन्वॉल्व हो जाएगा, और कन्वॉल्व होने के बाद में जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट अभी भी आ जाएगा, राइट। सो द सेम रिजल्ट विल बी अवेलेबल, राइट। सो वी से दैट बिकॉज इट इज इक्वल टू द एक्चुअल एस्टिमेट, इसमें से 1 by 2 pi nu और इतना पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आपने देख लिया कि ये 2 पाई डेल्टा ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, तो केवल अब ये बचा है जिसको आपको 2 पाई डेल्टा ओमेगा से कन्वॉल्व करना है, तो ये चीज आ जाएगी सीधे सीधे px e पावर j। इसका मतलब मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम का जो आपने एस्टिमेट लिया और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखी, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी उस ट्रू वैल्यू के बराबर आ रही है, लेकिन कब आ रही है, जब आपने n को बहुत लार्ज डेटा सेट ले लिया, इसका मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिया, तो फिर ये अनबायस्ड हो जाता है उस केस में।
इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपने इसमें u इक्वल टू 1 लिया तो ये u इक्वल टू 1 के लिए मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम की जो मेथड है वो पीरियोडोग्राम की मेथड में कन्वर्ट हो जाएगी। मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम जो है पीरियोडोग्राम में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपन देख सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे u1 लेते हैं, राइट, आपने यहाँ पे u1 लिया, इसका मतलब आप रेक्टेंगुलर विंडो सीक्वेंस के अंदर अगर समेशन करें तो ये सारे के सारे 1 summed up for 0 to n-1 ये देंगे n, when it is divided by n then u becomes 1. So for a rectangular window we treat u equal to 1 and therefore there is no need to divide it by u. उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन otherwise we have to divide it by u to normalize the power. Now variance of this again is having no difference. जैसा हमने पहले याद किया था variance of the periodogram, modified periodogram का variance भी वही है, px square e power j omega. What is px square? The psd square. So psd square अभी भी आ रहा है, true value of the psd square is nothing but the limiting value of this variance of estimate. So variance of estimate is equal to px square e power j omega for n tending to infinity, and therefore it is not having variance equal to 0 because this is not equal to 0 actually. So this is also not a consistent estimate. इसमें भी bias जो है unbiased तो हो जाता है वो asymptotically, लेकिन asymptotically उसका variance 0 नहीं होता है, इसलिए ये consistent estimator नहीं कहलाता। अब सवाल आता है कि frequency resolution इसमें कैसे निकाला जाए। तो frequency resolution को find out करने के लिए हम अगर डेल्टा एफ के फॉर्मूले को देखें जो अलग अलग विंडोज के हैं वो इन्होंने अगले पेज पर दे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, ये फॉर्मूले गलत हैं, इसलिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप इन फॉर्मूलों को देखने की बजाय जो दूसरे फॉर्मूले हैं उनको देखिए। मतलब विंडो डिजाइन के लिए आप ये फॉर्मूले वैसे भी याद कर रहे हैं तो आपको वो वाले फॉर्मूले याद करना चाहिए जो मैंने आपको विंडो डिजाइन के लिए भेजे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मिस्टेक कहें तो हेनिंग में 1.45 by n की जगह आना चाहिए 3.1 डिवाइड बाय n, यहाँ पर समथिंग 3.3 डिवाइड बाय n, तो कुछ चेंजेस हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर लेना। तो हम डेल्टा एफ को वही बोलेंगे जो वहां पर दिया हुआ है। अब सवाल आता है इसके अंदर पीरियोडोग्राम में और क्या एडवांसमेंट हुए। तो पीरियोडोग्राम की एवरेजिंग कर दी गई। अब पीरियोडोग्राम को जब एवरेज किया तो दो तरीके हो सकते हैं, कई सारी सीक्वेंसेस के सेक्शंस बनाए जाए और हर एक सेक्टर का या हर एक सेक्शन का एक पीरियोडोग्राम निकाला जाए और फिर ऐसे सारे पीरियोडोग्राम्स ओवरऑल लेंथ के निकलने के बाद एवरेजिंग कर दी जाए। तो फिर हो सकता है जो अभी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है वो इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो सके, राइट। So what we are doing is trying to make our periodogram, which is nothing but the estimate of true PSD, more consistent. इसका मतलब उसकी inconsistency को कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। So what do? Is we take periodogram of different sections of a sequence, जैसा आप overlap aid या फिर overlap save में करते थे वैसा ही करना है, but sequence को अलग अलग sequence के sectors में या sections में divide करना है। So suppose we use this first as non-overlapping signal segments। जब आप non-overlapping signal segments लेते हैं तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं और इनका डेवलपमेंट मैं अभी पूरा देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। हर सेगमेंट की लेंथ आपने एक सिग्नल का सेक्शन लिया, एक सेगमेंट लिया और वो सेगमेंट की लेंथ है L, तो 0 से लेके L-1 तक वो सेगमेंट जाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम L अप टू 2L-1 और इस तरह से सो ऑन, और लास्ट सेगमेंट मान लीजिए M है, तो टोटल सेगमेंट्स आपके हो गए M, हर एक सेगमेंट की लेंथ हो गई L, तो टोटल लेंथ हो गई M इंटू L। तो ये जो M इंटू L है यही N के बराबर आपने यहाँ पे कर दिया, राइट। टोटल सीक्वेंस की लेंथ थी 0 to N-1, ये था टोटल सीक्वेंस की लेंथ कैपिटल N, और इसको आपने ML या LM कर दिया मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये चीज अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। अब आप हर सेगमेंट का पीरियोडोग्राम ले रहे हैं, इसका भी, ऐसे आपके M सेगमेंट्स के M पीरियोडोग्राम्स आ गए, आपने उन सारे पीरियोडोग्राम्स को यहाँ पर एवरेज कर दिया। तो
सारे पीरियोडोग्राम्स का फिर आपने एवरेजिंग कर दिया, वो एवरेजिंग आप कहेंगे कि पीएचडी एस्टिमेट इस तरह से तैयार हुआ है। तो फिर ये कहलाएगा मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम, सॉरी पीरियोडोग्राम का एवरेजिंग, राइट। अब एक मेथड और है जो मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम का एवरेजिंग करती है। उसमें उस मेथड को हम वेल्च मेथड कहेंगे। इसमें दो चीजें रहेंगी, एक तो इसमें नॉन रेक्टेंगुलर विंडोज अलाउ होंगी जो हमने पहले मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम में किया था, और इसमें जो सिग्नल सेगमेंट्स हैं उनको ओवरलैप होने की परमिशन रहेगी। अभी हमने नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स लिए थे, अब हम ओवरलैपिंग सेगमेंट्स ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं वो यहां देखिए। एक सेगमेंट है जिसकी लेंथ बेसिकली एल है, लेकिन इसमें से 0 टू d-1 ही ऐसे सैंपल्स है जो कि नॉन ओवरलैप है, बाकी ओवरलैपिंग आ रही है d2l-1 में। तो d2l-1 में जो पार्ट इसका ओवरलैप हो रहा है वो आपने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पर इस सेगमेंट का जो स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स हैं वो d2l-1 जो भी नंबर है उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर इसके साथ ओवरलैप हो रहे हैं। इस तरह से सारे सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो सेगमेंट के फॉर्मेशन में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज आ गया है, और वो आएगा xin इक्वल टू xn प्लस id। पहले ये जो d था ये l था, पहले ये जो d था इसकी वैल्यू थी l। अगर आप इसके पहले देखें यहाँ पे तो ये वैल्यू थी l, अब उसी को d बना दिया। बाकी सारी चीजें सेम है क्योंकि पीरियोडोग्राम आपने एक बार समझ लिया है, तो पीरियोडोग्राम हर सेगमेंट का भी आप निकालना जान सकते हैं, उसका एस्टिमेट भी निकाल सकते हैं। तो अब मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम से हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड पीरियोडोग्राम की एवरेजिंग करने के लिए हमने ओवरलैपिंग अलाउ कर दी है, तो ये ओवरलैपिंग हमने यहाँ पे अलाउ कर दी है। और अब ये ओवरलैप्ड सेगमेंट्स का जब हम पीरियोडोग्राम निकालने के बाद में इसका एवरेजिंग करेंगे तो ये कहलाएगी वेल्च मेथड, वेल्च मेथड ऑफ पीएचडी एस्टिमेट कैलकुलेशन। बस ये फर्क है इन सारी मेथड्स में। मैं अभी ब्लैकमैन ट्यूकी वाली अप्रोच तक नहीं जा रहा हूँ, वेल्च मेथड तक ही इसको लेकर के इस लेक्चर को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। सो I hope this may solve your purpose of understanding what you mean by periodogram, what is PSD, what is ESD, and how power spectrum estimation is measured with the parameters, मतलब उसके parameters bias या variances क्या होते हैं वो आप इसके अंदर पता कर सकते हैं। So thank you all.